This is the second part of the Sarojini Nagar shopping and everything. I have made another video already. If you've not checked it out, please check it out. I'll leave the link over here. That is more about discovering and exploring the market and also the shop numbers and where you can find what. And this is just a haul of what I got. What's up my loves, welcome back to the channel. This is going to be a very special video because I took a trip from Pune to Delhi just for the Sarojini Nagar shopping. By the way, my name is Tanisha. In case you don't know me, you can like, share and subscribe this channel. If you like this video, I am putting in a lot of effort, you can see. And also you can check me out on my Instagram account at @radhatanisha_. By the way, this gorgeous corset sort of a top that you see over here, this is from Myntra. I will link this down below. Otherwise iska ek haul bhi aane wala hai, so I'm not going to reveal it completely, but it looks very classy. I have got a lot of accessory pieces. तो पहले accessory ही cover कर लेते हैं. Thing that I got, this is actually a transparent belt that you see over here. This is such a nice belt that you have, and you won't even believe my bargaining skill is not that good, but I went there with my bestie Radhika and she did a very good bargaining on this one, and we actually got this belt only for 90 rupees or something like that, because initially he was saying I think so 150 200 something like that, you know, like sort of holes over here, and then you also have the golden buckle over here. It's a very versatile piece. You should definitely check this one out. These retro style of rectangular sunglasses are so much on trend right now, and the detailing and quality इतनी ज़्यादा अच्छी है. उस टाइम ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने बोला यार कलर्स देख के मैंने सिर्फ ले लिया, but जब मैंने came back home and I saw this one, the quality is really nice, and we bargained it up to 120, which is quite a good price. It is so good. Like पुणे में FC रोड में भी ये 120 एंड स्टफ लाइक दैट उतने में ही मिलता है. अगर आपको पुणे की मार्केट में जाना है, लोकल मार्केट में, तो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. आई विल लीव इट ओवर हियर एंड लीव इट डाउन बिलो एज वेल. ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स दैट आई हैव गॉट दैट आर जस्ट फॉर ₹30. ठीक है, 30 के वहाँ पे थे, 50 के थे, फिर 100 के रेंज के थे, फिर 200 के रेंज के थे. इतना प्यारा है और ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है. The mirror work with this झुमकी, just look at it, कितना ज़्यादा. This is actually looking heavy, but it is actually very lightweight. This one I got, which is again just for ₹30, like bunch of घुंघरूज all around the hoop. It is not घुंघरू like ये बजने वाले घुंघरू नहीं है, but वैसे कुछ like this is a slightly different from all of those. So I've got a very different style. I love the square sort of style actually. After wearing this is looking very. Next up I got this one, which is in more like a western sort of a earring that I have over here. All these western earrings, these were available for 120 each. It's a very nice style. And lastly another झुमकास that I got. Oh my god, the pretty. ये मैंने अमृतसर में भी पहना था. By the way you guys, if you don't know, मैंने अमृतसर में व्लॉग बनाया था गोल्डन टेम्पल का, जलियांवाला बाग, द स्ट्रीट शॉपिंग इन अमृतसर एज वेल, बट वो सारे क्लिप्स डिलीट हो गए गलती से. एंड अनदर वन दैट आई गॉट ओवर हियर, ये बहुत राजस्थानी सॉर्ट ऑफ लुक दे रहा है मुझे. प्रिटी, लाइक बहुत ही यूनिक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है. वेंट फॉर अ फेरी बैग. दिस इज जस्ट फॉर 250 रुपीज़. Such an awesome color. This beige color is very nice with this golden chain का detailing. You have 2 pockets over here, and इसमें इतना सारा सामान आता है bro. Penny packs looks so smart. Had chocolate brown, tan brown, blacks and whites and बहुत सारा collection था. For 250 it's a very good thing. मुझे pants लेने का बहुत ही ज़्यादा मन था वहाँ पे, but मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई है. ब्राउन पैंट्स आई वॉन्टेड टू गेट दिस बिकॉज मेरे पास ब्राउन टॉप्स बहुत सारे हैं, ब्राउन पैंट्स नहीं था, सो आई हैड टू गेट दिस वन. दिस इज मोर लाइक द वेलवेटी टच वाला मटेरियल. दिस इज लाइक अ स्ट्रेट लेग सॉर्ट ऑफ अ पैंट. आई आस्क्ड हिम फॉर अ वेस्ट साइज 28. ऑब्वियसली यू कैन नॉट लाइक ट्राई ओवर देयर. तो एक्चुअली ये वेस्ट साइज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है. आई थिंक सो दिस इज अ 30 और 32 वेस्ट साइज, सो दैट इज वाई इट इज स्लाइटली लूज फॉर मी. अदरवाइज दिस इज such a nice pant and I bargained it to 200 rupees. अबे पैंट्स का इतना सारा कलेक्शन था, लाइक चेकर्ड पैंट्स एंड फॉर्मल ट्राउजर्स एंड एवरीथिंग. लाइक देयर वर सो मेनी थिंग्स. आई कुड हैव गॉट लाइक लिटरली एवरीथिंग. मेरा वीडियो बनाने में भी बहुत ज़्यादा ध्यान था, तो बहुत सारी चीज़ें मेरी मिस भी हुई है टू बी ऑनेस्ट. नेक्स्ट अप आई गॉट दीज वाइट trousers as well, so I do have a white jeans already. It's a very short length wala white pants. It is more like a comfortable pants, and it also comes with a zip at the side, so ये बहुत comfy type का होगा. So I actually got this pants
क्योंकि ये कुर्ते के साथ बहुत ही सही लगेगा. सो इफ आई हैव लाइक अ शॉर्ट कुर्ता ना अलॉन्ग विद दैट ankle length white pants like this will work so nicely. And this is also for a very thrifted area. वो same shop से ही मैंने इसको भी लिया था. So this one I got for 200 rupees again. Another blue jeans I got actually, and this is like a ripped style. इधर भी बहुत सारा ripped है, इधर है, and this is again ankle length sort of a style. But I got this one just for rupees 50. मतलब not everything is good in that section, but if you can, you know, like if you have a good eye, you can actually pick up some really good stuff. Got this one in the waist size 28. Fits amazing, very nice fitting. I also got these shorts that you see over here. This is more like a peach color sort of a shorts. I don't have a lot of shorts, and I actually saw that this one was from the Only brand. If you guys know, Only is quite a nice brand and they do have very expensive stuff. This one I got for 150 rupees. So the best thing is that कि उसके पीछे ना ऐसे U cut है. So it actually kind of you know, conceals your hip area and the butt area very properly. Cool sort of a top that you see over here. This is striped top. It has frills over here. Frills at the bottom as well. ये पहनने के बाद ठीक से समझ में आता है. This was again in the bundle of 100 rupees वाला, you know, there were racks of 100 rupees. तो उसमें से I got this one, which is also a very nice piece. Pretty, बहुत cute type का style है, you know, all those frills and everything. Okay, so this is a shirt that I got. ये इतना cool shirt है. This is giving me a Goa vibe, like perfect Goa vibe. मतलब अब तो मुझे गोवा का ट्रिप करना ही पड़ेगा because I have to use the shirt. This is a very cool shirt that you see over here. पूरे palm trees बने हुए हैं, Thailand beach and everything, which is a very cool style, and it's a very oversized sort of a style. And I got this one for only 200, which I bargained up. ऐसे prints के उसके पास बहुत सारे थे, बहुत cool type के prints थे, but वो mostly बहुत boyish लग रहा था. So that is why I got this one. ऐसी एक dress दिखाती हूँ, मतलब मैं नहीं गई थी वहाँ पे ड्रेस लेने के लिए at all. And he had like very nice dresses laid out, and he also had bunch of dresses kept over there which were like very cheap. Look at the neckline. This one actually comes across like this, and it is such an amazing quality. This is the proper steel deal. मतलब इसको देख के मुझे लगता है कि yes, it's a good purchase. Lastly, let's get into some footwears. I got two Indian type of footwear और एक heel भी मैंने लाया. So this is the black heel that I got for myself. I just got it for this buckle वाला जो style है ना, इसके वजह से मैंने ये black heel लेके आई थी. ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 to 2.5 inch heel होगी और ये काफ़ी comfortable है for the प्राइस दैट आई गॉट इट फॉर. दिस वन वॉज फॉर 250 रुपीज़, एंड थोड़ा सा और अगर स्टाइलिश में जाओगे तो वो 300 में था. ऑल्सो देर वॉज अ सेपरेट लाइक अ शॉप सॉर्ट ऑफ अ थिंग. आई थिंक सो दैट वॉज शॉप नंबर 6 or 7 समथिंग लाइक दैट, जिसमें एकदम स्टेटमेंट हील्स वर देयर, लाइक लिटरली स्टेटमेंट हील्स दैट यू सी ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग, दैट वर स्लाइटली प्राइजी. अनदर फुटवेयर दैट आई गॉट इज दिस flats that I got. Wow, just look at these flats. प्यारी फुटवेयर है ना. I wore this with my ethnic wear also. बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. It's a very nice flat, and especially this grey color is so good. उसमें golden color भी available था, even a black color was available, but this grey one stand out so well. This one I got for 250 rupees. He was saying 350 initially, but we actually kind of bought 2-3 pairs, so that is why उसने कम करके 250 में लगा दिया. Lastly, this जुत्ती as well that I got, a golden जुत्ती that I definitely needed. I mean obviously Delhi पंजाब जाके अगर मैं जुत्ती नहीं ली तो you are missing out on that completely. So that is why I got this one. Again, this one was for 250. ये सब कुछ साथ में ही लिया था. तो stones भी है, colors भी है. So I got this colorful one so that ये सबके साथ match भी करे. The very soft padding over here, तो बहुत ज़्यादा comfortable भी है. And I very clearly remember कि मैंने Amazon से ऐसी बहुत ही similar जुत्ती मंगवाई थी. वो थी 499 rupees के लिए, and this is just for 250, and both the quality and styling is exactly the same. Kudos to Sarojini Nagar. I think so we are pretty much done. In case I've missed out on something, I will put it in some other haul later on because बहुत ही ज़्यादा सामान है और सारा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है. I hope you guys liked it. I hope you guys enjoyed it. If you want me to make another Sarojini Nagar haul, then प्लीज़ गिव मी अ लॉट ऑफ लाइक्स एंड अ लॉट ऑफ व्यूज़. फिर से ट्रिप लेके दिल्ली चली जाऊंगी और फिर से ये हॉल बनाऊंगी बिकॉज आई तो लव डूइंग दैट. आई लव शॉपिंग एंड आई लव मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू गाइज. So if you demand and if you give me good views, I will definitely make it all over again.